नमस्ते, मैं अनीता शाह हूँ। मेरी एज 62 इयर्स है। मैंने यहाँ कैलाश दीपक हॉस्पिटल में 9 महीने पहले 23 नवंबर को एडमिट हुई थी इमरजेंसी में। मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी। रात को मैं इमरजेंसी में एडमिट हुई थी। उन्होंने मुझे फर्स्ट एड वगैरह दिया और उसके बाद मुझे थोड़ा आराम आया। फिर नेक्स्ट डे मेरे सब टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट से पता लगा कि वॉल्व में परेशानी है, वॉल्व चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर मितेश ने सब किया। डॉक्टर मितेश और उनकी टीम ने सर्जरी की और अब मेरे 9 महीने बाद मुझे काफ़ी आराम है, फीलिंग बेटर। और अब मैं अपनी डे टू डे लाइफ के काम भी कर पा रही हूँ और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है। थैंक यू। Hello, I'm Dr. Mitesh Sharma, Senior Cardiac Surgeon and Head of Department at Kailash Deepak Hospital, New Delhi. We had treated the patient Mrs. Anita Shah, who had come to us with severe breathing difficulty and palpitation. On her echo, we found that she had a severely narrowed aortic valve. She had severe calcified aortic valve stenosis, and because of the narrowing, the problem was concentric LVH, and she was having this issue. So we did aortic valve replacement surgery. We replaced the valve with a metallic valve, and now it is about a 1 year that this operation has been done successfully, and she is coming for regular follow-up, and she has done very well, and now she is feeling very good.